Good morning, dear students. So today in this English class, we are going to do a writing task, our first writing task, that is notice writing. Okay, now any one of you just raise your hand and tell me, have you seen a notice board in your school, or can anyone tell me what is a notice and what is it about? Just raise your hand and tell me. Have you seen a notice board in your school? What kind of information is there? What is the meaning of a notice and what do you see there? Yes, Ramneek? Notice is an information which is to be seen by everyone. Like in the school, it is for the students and the staff members. Okay. It is for the students and for the staff member. Means any general notice that refers to, that is meant for everyone. Okay. Maybe students, maybe someone else by an institution. And have you ever seen a notice board in your school? Where is it placed? Where is it placed? Krish? I'm near the GK and vocabulary board. Anji? Near the GK and vocabulary board. Near the GK and vocabulary board, there is a bulletin board in between both of them. एक vocabulary board है, एक GK board है, and a bulletin board has been installed in between both the boards. So there is a difference, मतलब a small difference between a bulletin board and a notice board. होता क्या है bulletin board में we can paste any type of notice, we can paste any type of news or some general instructions, or suppose some festival is coming, so we are just greeting everyone like happy Holi and happy Baisakhi. Whatever the festivals are coming, you are making some art and craft material related to that article and you are just pasting that thing on the bulletin board. But the notice board, that is specifically meant for notices. Okay, so there is a just this much difference between both of the boards. So in senior wing you must have seen a bulletin board and all the notices are pasted over there only. Okay, so let's start with the notice writing. Yes, notice writing. What is notice writing? A notice is a short piece of communication written in a formal style to convey an important information to a group of people or an organization. Hanji. Here we are talking from the point of view of any organization. Maybe it a school, maybe it a company, maybe it a firm, maybe it MNC. I mean, we can talk about from the point of view of any organization. So this is a short piece of communication. Notices are very short in length, so we must be aware that we are to write only required information in the notice. Before that, in your 6th standard, you have done message writing. मैसेज राइटिंग में क्या होता था? दैट वॉज लाइक एन इनफॉर्मल थिंग, एक इनफॉर्मल टाइप की वो चीज थी कि वी आर जस्ट सिटिंग एट आवर होम्स, किसी का मैसेज आया एंड दैट थर्ड पर्सन इज नॉट अवेलेबल एट होम एंड यू आर रिसीविंग दैट मैसेज ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन एंड देन अगेन यू वांट टू कन्वे दैट मैसेज टू दैट पर्सन एंड यू आर जस्ट राइटिंग ऑन अ slip. So that was an informal language. We need not to worry about the language, that we have to be very very formal. But instead of that, on its contrary, a notice writing is a formal style to convey an important information. We have to be formal in our writing in order to convey some information to a group of people or an organization. So it is written on notice boards in schools or public places. यहाँ में स्कूल और पब्लिक प्लेसेस बोला है, किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो बेटा, हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में
a notice board is placed so that everyone can go and read out the required information from there, because it's not possible to go from single person to person to person. Matlab, it becomes difficult to convey this type of information to a large crowd. But now in these days, जब हम टेक्नोलॉजी के ज़माने में रह रहे हैं, तो वी हैव फॉर्म्ड व्हाट्सएप ग्रुप्स, है ना, तो अब तो सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू चली जाती है. बट इवन देन इट नीड्स टू बी इन, मतलब इन राइटिंग, ये राइटिंग में होना चाहिए. और वो जो राइटिंग में है वो हम नोटिस बोर्ड पे प्लेस कर देते हैं. अभी तो आप ऑनलाइन क्लासेस में हो इसलिए ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है, बट वंस यू आर ऑफलाइन इन द स्कूल देन यू नीड टू रीड ऑल द इंफॉर्मेशन रिटन ऑन द नोटिस बोर्ड. सो नोटिस इज यूजुअली अबाउट एन इवेंट. कोई भी आपके स्कूल में इवेंट हो रहा है, कोई बुक एग्जीबिशन लग रही है, an annual function is going to be organized, a sports function is going to be organized, a fair is going to be organized, and inauguration, हमारे स्कूल के किसी ब्लॉक की इनॉग्रेशन है, उसके लिए हमें कुछ कोई हमने तैयारी करनी है या हम वो फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. अ फंक्शन मीन्स एनुअल फंक्शन इन द स्कूल, ठीक है, वो भी हेल्ड होता है. जनरल इंस्ट्रक्शंस, or we want to give some general instructions regarding anything, like now in these days corona has spread far away, so there are some general instructions regarding that, or there can be some rules, है ना, and we need to follow those rules, we need to follow those general instructions. So notice board is meant for these purposes, right? So before writing a notice, we must have a look on the format of notice writing. This is very, very important. Format is very important in writing a notice. Without following the proper format, if you try to write a notice, it won't serve a purpose. सब कुछ mess हो जाएगा, everything will be in a chaos. So we have adopted a technique. There is a specific format how to write a notice. So first of all, you need to draw a box. As you can see on your slide, I have drawn a box, same as you have done in your 6th standard during message writing. Message भी box में लिखा जाता था. Notice is also written inside a box. Then first thing is that you are to write the name of the organization, but all in capital letters. For example, you are to write Swami Sandas Public School. So SWAMISANTDASSPUBLIC. Every letter should be in capital. Next, notice itself आपको notice लिखना है, NOTICE, that too in capital letters as I have written on the slide. Next is you are to mention the date also. And see, I have told you many a times in languages, especially in English language, we don't accept short form of date. You need to write the date in expanded form. Expanded form means, suppose today is 10th April, so you will write 1010 APRIL April, comma 2021. Right? So you are to write the date in expanded form. आप ऐसे नहीं लिख सकते हो 20/4/21. That will not be accepted in English. Next is heading. हेडिंग का यहाँ मतलब है आप किस इवेंट के बारे में बताना चाह रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, यू आर टू गिव सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग समर कैंप. सो जो आपका हेडिंग या टाइटल है, इट शुड बी शॉर्ट एंड कैची. कैची इसलिए होना चाहिए, कैची में इसलिए कह रही हूँ, शॉर्ट इसलिए कह रही हूँ, सो दैट whenever you read the title or the heading of the notice, at once you grab कि हाँ इसमें हमें किस चीज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलने वाली है. अगर मैंने समर कैंप लिख दिया तो इट इज वेरी मच क्लियर फ्रॉम द टाइटल इटसेल्फ दैट a summer camp is going to be held in the school and there is some information related to that camp. So next is body of notice, means content part. Ab content part is very much important because all the information is going to be stored in this part. So it is to inform, because this is for the information. So generally it is not 100% sure that you will write your notice from there only, but generally we start like this, it is to inform. So what is to be informed?
What is notice about? देखो ये जितने भी WH words हैं, you have to take care of these WH words while writing a notice. That is what, who, where, when, what to do, and whom. What means what is notice about? Suppose notice is about summer camp. Who is addressed to? It is meant for whom, मतलब किसको एड्रेस किया गया है? स्टूडेंट्स को, ठीक है. वेयर इज गोइंग टू समर कैंप बी हेल्ड, कहाँ होने वाला है, मीन्स इसका वेन्यू कहाँ है. समर कैंप किसी एक्टिविटी हॉल में होगा, ओपन ग्राउंड में होगा, कहाँ होगा, स्कूल का कौन सा पार्ट है. Next is when. You are to mention the date and time of the event. For example, summer camp is going to start from 15th May, है ना. तो डेट और टाइम, टाइम मीन्स मॉर्निंग 8 से लेके कब तक है या 6 से लेके कब तक है. सो डेट एंड टाइम आर इक्वली इंपॉर्टेंट. Next, what to do. Some instructions are needed to follow during summer camp. So आप instructions दोगे कि आप shorts में आओगे, आपके पास जो t-shirt है वो house t-shirt पहन के आओगे. So a very little information, required information, ठीक है, means it should be authentic, it should be short, but it should be clear. क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है. शॉर्ट होने के चक्कर में ऐसा नहीं होना चाहिए दैट वी मिस आउट सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन. इट शुड नॉट हैपन. इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट इन एवरी मैनर, बट इट शुड बी कंसाइज होनी चाहिए, बट कंप्लीट होनी चाहिए. नेक्स्ट, whom means to whom to contact for any information. No doubt you have pasted whole of the information on the notice board, but still some kind of doubt can be there in your mind. So आपको उस doubt को clear करने के लिए किसको contact करना है. So to whom to contact for any information, that person's name or signature और उसका designation should be mentioned at the last of the notice, where you can write for any kind of information you can contact undersigned. The undersigned means जिसने यहाँ पे सिग्नेचर किए होंगे उसका नाम क्या है. फॉर एग्जाम्पल समर कैंप की जो इंफॉर्मेशन है वो हेड बॉय या हेड गर्ल दे रहा है, तो उसका डेजिग्नेशन क्या है, हेड बॉय और हेड गर्ल. So this is the format of notice writing, though very simple, but still you need to take care of all the steps. So all the steps should be there. If you miss out any of the steps, then there is a chance that you are going to deduct your marks, and that will not serve the purpose if any step is missing, right? So just see again, name of the organization in capital letter. Notice, जहां notice हम क्या क्या बताएंगे कि ये notice है किसी के लिए. Then date in extended form, then heading of the event or title of the event. Then it is to inform. What is to inform? See, 6 things are to mention, needed to be mentioned, and it is compulsory to mention. What, who, where, when, what to do, and whom. And in the end of the notice, signature and name and designation of the authorized person. I hope this format is clear to you. So in the next slide, I have written a notice for your reference so that you can go through it and you can find out how to write a notice. See, first of all, we read the question. Wait. You have planned to organize a summer camp for the children of age group 10 to 12 years for developing their creative skills in art, craft, clay modeling, music, etc. in your school during the month of May. Draft a notice in not more than 50 words for your school notice board giving details. Mention the last date of registration for the students. You are Reena or Roshan, Secretary, BV Public School, Chandigarh. Now see, in this question, you have been given the whole information. Now, how will you frame a notice out of this information? So first of all, as I already told you, you are to write the name of the institution or the name of the school. So name of the school is BV
Public School, Chandigarh. So see, every letter has been written in capital so that it catches the attention of the reader. Okay, so that is why we write this in capital letter. नेक्स्ट नोटिस, नोटिस इसलिए लिखा जाता है ताकि सबको पता चल जाए कि हम यहाँ पर कोई नोटिस पेस्ट कर रहे हैं और इसमें कुछ इंफॉर्मेशन है. नेक्स्ट इज डेट, डेट मेंशन करना बहुत जरूरी है. ऑन विच डेट यू आर पेस्टिंग द नोटिस सो दैट इट कैन बी पेस्टेड वेल इन एडवांस. अगर हमारा कोई इवेंट है वो 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है, हु इज टॉकिंग, बेटा म्यूट योरसेल्फ. अगर 15 अप्रैल से हमारा कोई इवेंट शुरू होने वाला है और वो नोटिस हम 14 अप्रैल को पेस्ट कर रहे हैं, सो दैट विल नॉट सर्व द पर्पस. यू नीड टू पेस्ट इट इन वेल इन एडवांस. नेक्स्ट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, टाइटल और द हेडिंग ऑफ द नोटिस. सो एज दिस नोटिस इज अबाउट समर कैंप, सो यू विल राइट समर कैंप सो दैट एट वंस द रीडर गेट्स टू नो कि क्या होने वाला है, किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन है. भास्कर, म्यूट योरसेल्फ. So see the body of the notice. The school is planning to organize a 2-week summer camp. आप ऐसे भी शुरू कर सकते हो जैसे मैंने पिछली स्लाइड में लिखा था. It is to inform everyone that the school is planning to organize a 2-week summer camp for the children of age group 10 to 12 years for developing their creative skills in art, craft, music, clay, modeling, etc. तो ये लाइन बेटा देखो सेम हमने ऐसे ही उठा ली है बिकॉज इट इज गिविंग अस द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू समर कैंप. ठीक है. इन द स्कूल कैंपस वेयर, ये हमने सारे WH यूज करने हैं. व्हाट मीन्स, कौन सा इवेंट है, जो मैंने बता दिया कि समर कैंप है. हु मीन्स हु इज एड्रेस टू, कौन एड्रेस हो रहा है, चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप between 10 to 12 years. नेक्स्ट है वेयर, वेयर अब मैं यहां बता रही हूं इन द स्कूल कैंपस, स्कूल के कैंपस में होगा समर कैंप. व्हेन, व्हेन फ्रॉम 5th to 20th मई, 5 से 20 मई के बीच में है, ये हो गया. उसके बाद व्हाट टू डू, व्हाट टू डू में those interested may deposit ₹1500 in the accounts office by 1st May. ठीक है, 5th मई से शुरू है तो हमने व्हाट टू डू, करना क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है उसके लिए. इंस्ट्रक्शन है कि वी आर टू, द इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर टू डिपॉजिट फी दैट इज ₹1500 and where are to deposit in the accounts office by 1st May 2000. चलो यहाँ मैंने 20 लिखा है, anyways it's 21. Now whom to contact? For more details, contact the undersigned. This is very, very important. You must write this line. For more details, contact the undersigned. Now, undersigned कौन है? As we have been given the name Reena or Roshan. You will write the name and you will put signature also. यहाँ मैंने सिग्नेचर नहीं किए हैं बिकॉज इट वॉज नॉट पॉसिबल. सो अगर आप लड़की हो तो रीना लिख लो, लड़का हो तो रोशन लिख लो, एंड देन put your signature. And what is your designation? You are secretary of the school. So in the end you will write your designation or your post. I hope it is clear to you. This is really very simple. और ऐसे notices हम अपने school में बहुत सारे देखे हैं, especially during annual function. When there is screening regarding annual function, then we put a notice on the notice board and we mention the classes for the audition. ऑडिशन के लिए हम बताते हैं, हम ये भी बताते हैं कब से कब तक ऑडिशन होनी है, व्हाट आर द टाइमिंग्स, एंड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज व्हाट आर द रूम नंबर्स दैट हैव बीन allotted. I think this is clear to you. Now there are some key points to remember. First of all, relevant length of a notice is 50 words. As I already told you, it should be short, so you are to give only relevant information. It should be concise but it should be complete. प्रेजेंट द नोटिस इन प्रॉपर फॉर्मेट. अगर आप इस फॉर्मेट को फॉलो नहीं करोगे, सो इट इज नॉट गोइंग टू सर्व द पर्पस, यू विल डिफीट द पर्पस अगर आप फॉर्मेट को फॉलो नहीं करते हो. एंड व्हाट इज द फॉर्मेट? इंस्टीट्यूशन, नोटिस, डेट, टाइटल, बॉडी एंड द डेजिग्नेशन.
Next is notice is always written in a box. That is clear. Name of the organization is written in capital letters. The word notice is also written in capital letters. Try to write notice in passive voice. हाँ जी, पैसिव वॉइस में लिख सकते हो, मतलब कि यू नीड इट इज टू इन्फॉर्म दैट जो होता है वो पैसिव ही होता है. ओके, सो ट्राई टू राइट इट इन पैसिव वॉइस. डोंट यूज पर्सनल प्रोनाउंस. आपने देखा यहाँ मैंने कहीं भी आई या वी का यूज या किसी भी पर्सनल प्रोनाउन का यूज नहीं किया है, बिकॉज इट इज अ वेरी फॉर्मल काइंड ऑफ थिंग, सो यू कैन नॉट यूज पर्सनल प्रोनाउंस. ओके, it is written in from the point of view of a third person only. So these are the key points to remember. Now there is another notice for your reference, so just read it out. Frame a notice for the students of your school, that is Aurobindo School, Dehradun, informing them about tour to Rajasthan. Give every detail regarding the tour including charges. You are Rama, the head girl of the school. So how to write this notice? First of all, the name of the school, that is Aurobindo School, Dehradun. Then the word notice itself, that is NOTICE, and then the date. मैंने डेट कोई भी लिख दी है, एनीवेज वो वैसे उठाई हुई है. So all the students will be pleased to know that our school is organizing a 5-day tour of Rajasthan as per details given below. So what are the details? Classes, कौन सी classes जाएंगी, date of departure, date of arrival. So all the information has been put here. Those who are interested may deposit rupees 3,000 per head. The cost is inclusive of sightseeing, boarding and lodging at a 3-star hotel. Please do so by 12th July. And undersigned is Rama, the head girl of the school. Now there is some mistake in this format. Find out the mistake in the format. Just raise your hand and tell me what is the mistake in this. डिपार्चर की डेट पहले लिखी है, अराइवल के बाद. No title or heading written in this notice. Very good, Dhruv Thakur, you are exactly right. Heading or title of the notice has not been given. It has not been given. That is the main mistake in this format. मैंने अभी आपको सिर्फ format में mistake पूछी है ना? So this is the mistake in format. And one more mistake is there. Krishav, you were saying something? डिपार्चर की डेट पहले लिखी है, अराइवल के बाद. No, that तो hardly matters बेटा. Departure पहले ही आएगा, पहले यहाँ से जाओगे तभी आप आओगे. Excuse me, ma'am. Yes, Ramneet. मैम इसके एंड में मैम ये नहीं लिखा हुआ है कि किससे कांटेक्ट करना है. चलो ठीक है, वो लाइन नहीं लिखी, साइन भी सिग्नेचर नहीं नहीं होंगे बेटा. स्लाइड में साइन नहीं हो सकते. नेम इज रिटन, मैंने आपको पहले यहाँ भी बताया था ना कि साइन नहीं है, बिकॉज आई कैन नॉट साइन ऑन द स्लाइड. चलो वो तो मैंने आपको ऐसे बता दिया, बट नेम इज गिवन, दैट इज सफिशिएंट. कि डिपॉजिट कहाँ करनी है फीस? यस, कहाँ डिपॉजिट करनी है वो भी नहीं लिखा हुआ, और हम कितने बजे और कैसे जाएंगे वो भी नहीं लिखा हुआ. टाइम इज नॉट मेंशन्ड, है ना, और हम कहाँ से जाएंगे वो भी नहीं लिखा. स्कूल कैंपस से बस जाएगी या कोई और स्टॉपेज है, कहाँ से बस जाएगी. So this slide I have given you just for your reference so that you can find out the mistakes in this, right? So I hope everything is clear to you now. Now again a notice, again a mistake in this. Many mistakes are there. पहले तो कैपिटल में नहीं दिया गया ना, ये कैपिटल में दिया गया है, डेट इस साइड लिखी है, और ओके ग्रीन ड्राइव हैज बीन गिवन. मैंने क्लासेस में नहीं लिखी. कहाँ? यहाँ क्लासेस नहीं लिखी, यहाँ नहीं आनी है क्लासेस, बिकॉज दिस इज द नोटिस रिगार्डिंग जनरल इंस्ट्रक्शंस. मैंने आपको बताया था ना कि हम जनरल इंस्ट्रक्शंस या हम वैसे किसी के लिए भी नोटिस फ्रेम कर सकते हैं. सो दिस इज नॉट मेंट फॉर द क्लासेस.
Just read it out. This is to inform all students that our school is organizing a green drive to create awareness among the students and the general public about the need to conserve our forests and wildlife as part of the World Wildlife Day celebrations on 3rd March. All students are requested to participate and make a difference to the world. For more information, please contact the undersigned. Although contact the undersigned and everything it is right, बस इसके upper format में थोड़ी सी problem है. ठीक है, ये कैपिटल नहीं है, ये कैपिटल नहीं है, डेट हमारी लेफ्ट साइड आनी है. Am I clear? Is it clear to everyone? I hope it is clear. Still you have any doubt, you can ask me, and there is a Google form, a small test is there regarding notice writing only. Only 7 questions are there, so I request ma'am to please paste the form and you are to solve that Google form. Thank you very much, beta.